intermolecular forces को सब बताओ intermolecular force intermolecular forces intermolecular forces mean force of attraction between two molecules force of attraction between two molecules कहते हैं मतलब intramolecular forces हुई intramolecular forces कम ionic bond covalent bond coordinate covalent bond metallic bond alors molecule की दन कम forces दन लोगों का सवाल the दो molecule को मस्के कम force है लोगों का सवाल intermolecular forces संग वो the force of attraction संग वो define do the force of attraction among two molecules is called intermolecular forces. Intermolecular forces. The force of attraction among two molecules is called intermolecular forces. Daddy namak kita semua ni kenapa kami khabar है वो पहले intramolecular forces no intermolecular forces weak कमजोरी बनिस्बत दसो the intramolecular forces संगा intermolecular forces are weaker than intramolecular forces. For example, rakamunga ka covalent bond consider kona covalent bond. No covalent bond 25 times stronger in relation to the intermolecular forces. 25 times say stronger in the intermolecular forces. But जरा simple example रखूँगा लग दियो हुआ तो करेगा. Let's suppose the water molecule है. You know water is polar molecule. Polar means the oxygen electronegativity ज़्यादा था. न oxygen माने कम चार्ज है, partial negative. हाइड्रोजन माने कम चार्ज है, partial positive. हाइड्रोजन माने कम चार्ज है, partial positive. दी oxygen में partial negative. बड़े माने partial positive, बड़े माने partial positive. Also, intermolecular force the young molecule in the water or the bulk molecule in the water. The D molecule or the D molecule को मत करो force of attraction दे ये तो हम लोग intermolecular force of attraction पर कम जिगरे the D water molecule partial negative oxygen और the D water molecule partial positive hydrogen पर मत की बसई बदले के बाद attractive force इतना positive negative पर attract नहीं करा दा कम से कम dotted line माने हमारे present को दे तो हम लोग intermolecular force है the दो molecule लोगों की कम force है the दो molecule आवाज बंद हो रहा है यो molecule देखना बड़ी molecule का एक्सेल का हारों नंबर्स क्यों force देखना आगे तो intramolecular force हुई और दा कम intramolecular force हो दा covalent bond सौदा और दा तुम्हारे खबर हो कि intermolecular forces are weaker दा weak force है और दा सही strong जब खुदा माने dotted line में represent कर दा में दा bold line में represent कर दे bold line से represent को दा बस strong है और दा बस weak बोलेगा यो दा बॉन्ड ब्रेक को मिसाल ये को सोच जिसे दा बॉन्ड ब्रेक कोमा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कोमा मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ब्रेक कोमा सब ब्रेक कोमा इंट्रा तो द इंट्रामोलिकुलर फोर्स द ब्रेकिंग द पारा 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी पकार ये मतलब है कि 1 मोल ऑफ OH बॉन्ड OH कम द कम फोर्स है OH द OH को मस्की इंट्रा देगा तो दे पर सुपर एनर्जी पकार 464 किलो जूल और कहीं कुछ सोच से दाज़ है ब्रेक को मदा दा बार ब्रेक को मदा दो मॉलिक्यूल रोमांस की बार मारता हूँ मदा दो मॉलिक्यूल रोमांस की कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दा ब्रेक को मदा नुदा दे रे पारा 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी पकाता नु कम ज़्यादा सोना दा एनर्जी ज़्यादा है तो दिस मतलब कुछ दा बॉन्ड स्ट्रांग है दा फोर्स स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस फोर्स पहले खबर वाली कोई है द मैटर फिजिकल स्टेट डिपेंड करें पर intermolecular forces माने and you know physical state is physical property
لکه دا میټر په سالډ سټیټ کې دا په لیکوډ سټیټ کې دا په ګیشیس سټیټ کې the physical existence of matter depend upon what? It depend upon the intermolecular forces. کچرتا په میټر کې د مالیکول په منځ کې اټریکټیو فورسز سترونګ نو دا په سالډ سټیټ کچرتا په میټر کې انټرمالیکولر فورسز ویک دا په لیکوډ سټیټ او کچرتا په میټر کې انټرمالیکولر فورسز نور هم ویک یا بالکل ونه نو هغه په ګیشیس سټیټ په دې خبر باندې پوهیږئ لکه موږ باندې درې فزیکل سټیټس ورم پلازما نه ټارګټ اباوټ پلازما دغه صرف درې ایکسپلین کوم یو د ګیس بل د لیکوډ بل څه سالډ موږ باندې فزیکل سټیټ میټر دی کنه دا یو میټر ولې په فزیکل سټیټ کې دی ځکه چې د دې کې په مالیکول په منځ کې انټر مالیکولر فورسز ډېر زیات ویک لیکوډ کې ولې لیکوډ کې مطلب د سالډ نه پکې انټر مالیکولر فورسز سترونګ دي او د ګیسز نه پکې ویک دي او سالډ ولې کلک دي هغه کې انټر مالیکولر فورسز انتهایی زیات سترونګ دا سره یاد ساتئ د سالډ میلټینګ پوینټ او د لیکوډ بوایلینګ پوینټ دا ډیپند په څه باندې کوي دا په انټر مالیکولر فورسز باندې ډیپند کوي کچرتا په دې سالډ کې انټر مالیکولر فورسز انتهایی زیات سترونګ نو دغه سالډ باندې میلټینګ پوینټ زیات کچرتا په لیکوډ کې انټر مالیکولر فورسز سترونګ نو دغه لیکوډ بوایلینګ پوینټ سي دا به هاي دوه قسم لیکوډ ځاله یو petroleum yeah just consider another organic solvent ether or water the water boiling point is 100 degrees centigrade the ether boiling point was at 25-30 degrees centigrade the ether boiling point only come there ځکه چې په ether کې د یو مالیکول د بل مالیکول په منځ کې فورسز اف اټریکشن کم دي او په واټر کې انټر مالیکولر فورسز دي سترونګ نو د سویچ څخه موږ دا خبره کولای شو چې the melting point of solid the melting point of solid and boiling point of liquid depend upon what depend upon the strength of intermolecular forces دا پته باندې ډیپند ګورئ کوم مثال یو سالډ سیکولر میټر سے سالډ پاره کې انټرمالیکولر فورسز IMF څه شي دي انټرمالیکولر فورسز مطلب دی کا انټرمالیکولر فورسز سترونګ نو د دې میلټینګ پوینټ په صحیح high melting point په دې به صحیح high melting point او د دې ریورس خبره وکړه کچې د مسالې کې انټرمالیکولر فورسز ویک وډ بوایلینګ پوینټ په لو دغه شانتي کپل لیکوډ کې سو کچې دا په لیکوډ کې انټرمالیکولر فورسز سترونګ سو پکې سترونګ نو دې به high boiling point څه وایي دې high boiling point clear se pare na now intermolecular forces actually there are three types of intermolecular forces one is called dipole interaction the second one is called hydrogen bonding and the third one is called London dispersion forces so we will discuss it one by one you know our name of the sawayu dipole forces dipole forces sishko dipole forces dipole in direction या dipole forces what does mean from the term dipole our dipole भी जाने dipole वही सना डाई दो तो वही पोल तर तुम तो वही ना नो आग माने कि वो चिपागे कि पयो एटम माने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बबल एटम माने पार्शियल नेगेटिव चार्ज देख रहे माने कि तो मुंगा सवायो डाइपोल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन
वो है न the dot electronegativity same लग रहा है न बदली वाले से चार्ज थी न बदली वाले से चार्ज थी डेटा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाइस वो दवायु नॉन पोलर मॉलिक्यूल कच्चा तददे परत से ऊपर एग्जांपल कंसीडर कमा HCl समय कंसीडर को HCl the chlorine electronegativity ज्यादा दा वाला इलेक्ट्रॉन जान से कि बिट की बदली वाले में कम चार्ज है पास में जो बदली वाले में कम चार्ज है पास दी मॉलिक्यूल के होगा वो पोलर मॉलिक्यूल या होता डाइपोल वाला सवर दवायु डाइपोल में वो कम मॉलिक्यूल दवायु dipole R molecule दवायु which is having two end one is partial positive and the other one is a partial negative so those molecule which is having partial positive and partial negative ends are called dipole this look the way dipole मतलब दारे चिपटे के पुत्र पूरी पदे के पुत्र पूरी और the day dipole positive or the day dipole the negative को मस्त बस attractive force ही करना the attractive force तो बस वही dipole force define को वैसा था the force of attraction that's what we define को है the force of attraction between partial positive end of one molecule and partial negative end of another molecule is called dipole force and dipole forces. Get something over here. The yo molecule positive, partial positive, or the one molecule partial negative को मस्त किसको attractive force दे. The attractive force तो होगा सवाई. Dipole interaction. सब होता वायु. Consider the dipole interaction strong हो. मतलब कि molecule बा melting point या boiling point दा वैसे ही पे high. Go right. For example, we are considering the example of ये होगा. HCl. You know, chlorine is partial negative and hydrogen is partial positive. Hydrogen is partial positive, chlorine is partial negative. Partial positive, partial negative. Partial positive, partial negative. क्या करते हो ना? वो the molecule, the HCl molecule ले, the HCl molecule. The HCl partial negative or the HCl partial positive hydrogen or the molecule partial negative chlorine को मस्त attractive force ही करा. Yes sir. Attractive force का represent को हमारे साथ dotted line में डाल सकते हैं. दा शब्द तो हम attractive force ही. दा शब्द तो हम attractive force ही. न दे तो हम का सवाई dipole force. दे तो हम का सवाई dipole force. क्लियर हो गया? Now consider another molecule. वो दा बस ना राजी. करो जितना सो यो बोतल वाले अपाय के तासो HCl वाचा. HCl लिक्विड वाचा. सही करा? या मिसाल तासो होता HBr वाचा. HBr. कैसे वाचा? HBr. हाँ. बल एग्जांपल में. HBr and HBr. You know halogen are electronegative, so it will require what? Partial negative charge करिए मैंने partial positive. Then the three molecule, the bromine partial negative, bromine और the partial positive हम लोग दोनों से attractive force ही करना है. then चलता तब हम से attractive force. उसका तासो HBr वाला है ना, HBr liquid वाला है और बिकर के देगा ना. दा मिसाल पर बिकर को से यो molecule नहीं करना, पराशर molecule नहीं करना. तो यो HBr partial negative bromine और the bottom HBr partial positive hydrogen मस्त की attractive force ही. दक्कत वो मस्त वायु London dispersion force. Sorry, dipole force. सही है. हाँ, बल तो वो है. मिसाल तासो पर बिकर की वो आवाज़ है. या बदिचकी की वो आवाज़ है. या बाहर से मिसाल कंटेनर में भाई कैसा होती वाटर.
The water structure that's like H2O. That's it. You know, oxygen is electronegative, hydrogen is partial positive. Now partial positive, partial negative, partial positive, partial positive, partial negative, partial positive. The day water molecule partial positive hydrogen or the day water molecule partial negative oxygen. Paman se partial force is na. The day molecule partial positive taraf or the molecule partial negative taraf. The day molecule partial positive or the molecule partial negative. They don't know what dipole forces. Some what about you? Dipole forces. Clear to the boy. Then there was also hydrogen bomb. Some what about you? Hydrogen bomb. Hydrogen bond is a subtype of dipole. Hydrogen bond home dipole force. They are dipole interaction. परत बघितले चिकना the yo molecule partial positive hydrogen शी और the double molecule most negative atom most negative atom के ग्रेड मुद्रा से या फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दे तो बस स्पेसिफिकली मुंगा सवाल दे dipole force था दे तो मुंगा हाइड्रोजन बॉन्ड वही सब होता है लेकिन ये वो करेगा ना दे तो हम the molecule partial positive hydrogen the molecule partial negative फ्लोरीन then the home that the partial positive hydrogen partial negative bromine दे और then the home that the molecule partial positive hydrogen the molecule partial negative oxygen दे ख्याल होता the but which community is simply you can say dipole forces और down dipole force है खुद ही तब यार करा सो है the molecule partial positive hydrogen शो और the molecule partial negative oxygen ला रही है the partial negative fluorine ला रही है partial negative nitrogen the dipole specifically you can say that this is hydrogen bond. So how you will define hydrogen bond? Hydrogen bond कैसे define करें? Hydrogen bond को कैसे define करें? The force of attraction between partial positive hydrogen of one molecule. ये कितना समासों में partial positive hydrogen of one molecule and partial negative atom of another molecule. और partial negative atom कम के atom के निशी fluorine, hydrogen and oxygen. दिन तो हम लोग सवाल hydrogen bond. So what do I do? Hydrogen bond. और hydrogen bond with the dipole force is number say stronger. So why that stronger? So how do you define hydrogen bond? Hydrogen bond. Hydrogen bond is define the way the force of attraction. The force of attraction between partial positive hydrogen of one molecule and partial negative atom और partial negative atom कम के रेशो फ्लोरीन के रेशो ऑक्सीजन के रेशो ना स्पेसिफिक दा 3 डिग्री ना वो लोग शिकेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की सुमति 3 of another molecule दे तो लोग कैसे वायु हाइड्रोजन बॉन्ड H पवार कितना सही है हाइड्रोजन बॉन्ड सही है बने बोले बड़ी एग्जांपल तो बोले का HF molecule पर फ्लोरीन is most negative atom देखा पहले मैंने बताया था कि partial negative पहले मैंने partial positive पहले मैंने partial positive पहले मैंने partial negative partial positive partial negative that's it the D molecule the U molecule partial positive hydrogen और the one molecule partial negative atom किसने लाए फ्लोरीन ला लेगा that's the most चीज है that's the most hydrogen bond that's it ये तो मोबाइल H दरअसल the D molecule partial positive hydrogen और the D molecule partial negative fluorine ये तो हमको सवाल बोला hydrogen bond ये तो हमको सवाल hydrogen clear सर this is also example of dipole but dipole की consideration है dipole देखें the molecule partial positive और double molecule partial negative but specifically जितना the molecule partial positive hydrogen और double
फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रचनी ते बघा कसं वायू हायड्रोजन यो होता है HF बल मिसाल वाटर कंसीडर करें partial negative oxygen percentage of hydrogen percentage of hydrogen percentage of hydrogen partial negative oxygen da nan kadutta over there see fala ha the yo molecule percentage of hydrogen and the one molecule partial negative oxygen the two ones ki partial negative force hai this is also example of hydrogen dipole dipole hai but that's she de that's the molecule percentage of hydrogen and the partial negative oxygen that's she de hydrogen Clear से मुझे बोलेगा ना clear बोला उसको है começar a usar alcohol da organic compound hoje vai hoje sabe que hoje aí tem alcohol o organic compound para sempre vem chela para ter कोई अगर तो सुबह तो बाबा चलेगा ना वो बोल के हल्की की वीडियो को हाइड्रोजन में जगह से बाद का वाटर के से अल्कोहल के पास नेगेटिव ऑक्सीजन स्टे करना अगर पास नेगेटिव ऑक्सीजन में वाटर का पास जो हाइड्रोजन से इंटरेक्शन हुई कि हाइड्रोजन पार्ट में जुड़ के चिकन इंटरेक्शन लाजी द सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट क्या बना है किसी की बड़े सॉल्वेंट की साल्की the then first was your time part and it is dipole interaction and inshallah we will discuss it after tomorrow so if you sabab छुट्टी रहेगा sabana bas inshallah